And what is a foreign currency transaction first of all? Before I talk about foreign currency transaction, I would like to talk about something called as a local currency transaction. नहीं, इसको लोकल नहीं बोलेंगे, हम उसे कहेंगे सर reporting currency transaction. We will call it as something called as reporting currency transaction. Visible? I'll use as far as possible a white background. Reporting currency transaction. What is a reporting currency? The currency in which the annual accounts, the final accounts of any business entity are reported is called as a reporting currency transaction. सर हमारे लैंग्वेज में रिपोर्टिंग करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब है local currency. For India, when I'm living in India, when I'm in India, all the annual accounts are reported in Indian rupees. So Indian currency rupee is Indian rupee is the reporting transaction. Now coming back to that question, is transaction done in Nepal a foreign currency transaction? That doesn't depend upon the location of the countries. For accounting purpose, if I'm incurring the transaction, if I am conducting the transaction in Indian rupees in Nepal, I don't know how many of you know this. Almost all of you must be knowing this. That you can enter into a transaction in Nepal in Indian rupees. So अगर मैं नेपाल में इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शन करेगा तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होगा. So your answer was hypothetical. What Abhinav, who said that? Abhinav was there. What Abhinav said is that a transaction which is cross country will be called as a foreign currency transaction. Nowhere wrong. That is based on the assumption कि भाई नेपाल में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नेपाल का करेंसी यूज करेंगे. I would like to add one more point to that statement given by Abhinav is that any transaction done in a currency other than reporting currency is a foreign currency transaction. इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करेंसी कौन सा है? तो इंडियन रुपीस के अलावा बाकी किसी भी कंट्री का आप करेंसी यूज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? One more question now. One more question. I am spending $50 in India. So I paid $50 to, let us say, buy a headphone in India. So according to you, it is a foreign currency transaction or not a foreign currency transaction? क्यों? इंडिया में हुआ ना? Perfect. Got my point? So now you should not look at the location. You should look at in what currency the transaction is done. If it is done in the reporting currency, it is not a foreign currency transaction. If it is done in other than reporting currency, it becomes a all clear. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. We have something called as accounting standard 11.
नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. This accounting standard 11 basically deals with how the foreign currency transactions will be recorded in the books of accounts. तो हमारे लिए टॉपिक ऐसा है कि भाई इंडिया का कोई एंटिटी इंडिया के बाहर किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको इंडिया में कैसे रिकॉर्ड करेगा. That is what is dealt under AS. What my point? So AS 11 will discuss how to translate a foreign transaction from a foreign operation into a reporting currency, that is in Indian rupees. सिंपल वर्ड्स में इंडिया के बाहर कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेट अस इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और अमेरिकन डॉलर्स और दिरहम्स, उसको मैं इंडिया में कैसे रिकॉर्ड करूंगा वो हमको कहां पे मालूम पड़ेगा, या वो कैसे करना है, कौन डिस्कस करेगा, कौन बताएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 clearly they are specified here. Accounting for AS 11 deals with accounting for transactions in foreign currency, translating the financial statements of foreign operations to reporting currency, and accounting for forward exchange contracts. ये क्या होता है सुना है किसी ने? What is a forward exchange contract? Has anyone ever heard about forward exchange contract? No one. I said wrong answers are welcomed. Wrong answers are welcomed. Yeah? You know to type? No one? No. Ani? No one? क्या अभिनव ने क्या कॉपीराइट्स लिएगा, सब आंसर वही देगा, तो कंसेशन बन रहा है क्या फीस में? बाकी लोग का लॉजिक ऐसा है, अपन ने पैसा भरा, अपन बोलने का नहीं, आता है तो भी नहीं बोलने का, पैसा भरा है सामने वाला बोलेगा. सिंपल सा लॉजिक है ना अभिनव, बोल. अच्छा, all of you know this that foreign exchange rates keep on changing. Rupee appreciates, rupee depreciates, they keep on giving it in the newspapers. Rupee has just 2 days back there was a news that rupees at an all-time low of at 71 rupees and so many different things. My point is exchange rates keep fluctuating. Exchange rate keeps fine. Let us say I borrowed a foreign currency loan of $10,000. I have borrowed a foreign currency loan of $10,000. I am in India. I'm in India. $10,000 borrowed from, let us say, someone in, why it should be always US. There's someone in Dubai. So I got a friend in Dubai, let us say, and I borrowed $10,000 from Rakesh, located in Dubai. Now Rakesh sent that money to me online.
when that money will be transferred to my account in India, they won't transfer $10,000. They will convert that $10,000 into common sense. Let us say the rate is 70 rupees. मान लो, I got $10,000 American dollars multiplied by 70 rupees. That comes to how much? Thank you for such a difficult answer. 7 lakhs. So I got 7 lakh rupees. No, sir. I borrowed $10,000, which when converted into Indian rupees became let us say the date was 1st May 2022. And I promised Rakesh that मैं तेरे को पैसा वापस करेगा after 3 months. 1st August 2022. अब 1st August 2022 के बारे में थोड़ा सोचते हैं. What can happen on that day? Exchange rate कम ज्यादा होते रहता है सर, ऊपर नीचे होते रहता है. It may fall, it may go up, it may go down. We'll take both the possibilities. Let us say exchange rate is $1. $1 is equal to rupees 68. देखो, जब मैंने डॉलर्स बोरो किया था मेरे फ्रेंड से, तब मैंने उन डॉलर्स को बाय किया, अपना उन डॉलर्स को इंडिया में आने से पहले बेच दिया. इसको बेचा सर, बैंक को बेचा. बैंक ने मतलब मुझे क्या दिया? इंडियन रुपीस दिया. See, when I'm borrowing in dollars and I'm converting those into Indian rupees, I'm selling the foreign currency. I'm receiving Indian currency. बराबर? Now it will be exactly opposite, vice versa होगा. Now I need dollars to pay to Rakesh. राकेश बोलेगा बॉस मैंने तेरे को $10,000 दिया था, फ्री में दिया, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे $10,000 ही चाहिए. ठीक है. Now to buy $10,000, how much cash I need to pay? Haji. Yeah. मुझे राकेश को $10,000 वापस करना है बेटा. अभी लाउड 6,80,000 मुझे कैश लगेगा. मतलब मैं मेरे बैंक को मेरे जेब से 6,80,000 रुपीज निकाल के देगा. मेरा बैंक क्या करेगा? उसके बदले में मुझे क्या देगा? आई एम बाइंग डॉलर्स नाउ. आई एम और वही डॉलर में राकेश को देगा. अच्छा, जब मैंने पैसा लिया था तब मुझे इंडियन रुपीस में कितना पैसा मिला था? अब मैंने जब वापस किया तब कितना वापस किया? मेरा तो ₹2 का फायदा हो गया पर डॉलर. Because of the exchange rate fluctuation, I had a benefit of that is 20,000 rupees का फायदा हुआ. I received 7 lakh and when I repaid 6,80,000. I had a net benefit of 20,000 rupees. Fine. So look at the other way now. It may happen that the rate on 1st August may be $1 equals to let us say 75 rupees. अब मुझे $10,000 वापस करने के लिए कितना कैश लगेगा? When I borrowed and converted into Indian rupees, कितना पैसा आया? 7 lakhs. When I returned the money, how much I incurred? I paid 50,000 more. फायदा नुकसान है. अच्छा, is this 50,000 I am paying extra is the interest? No. This 50,000 I paid additional is purely because of the exchange rate difference.
This is purely because of the exchange rate fluctuations. बात समझ में आ रही है? This accounting standard 11 is basically all about deciding how to treat this exchange rate difference of 20,000 or 50,000 as the case may be. Now coming to my point, I was discussing something called as forward contract. Now when I borrowed from Rakesh, I knew very well, bhai, economy is not stable. Exchange rates may go very up or they may go very down. Therefore, while borrowing the dollars and converting them into Indian rupees at 70, I enter into a forward contract. Forward contract is a contract for some future date, where I will have an agreement, I will have a contract with the, let us say, a bank to buy the dollars at rupees 70. मैंने borrow कब किया था? First week. मैंने borrow कब किया था? मुझे पता नहीं मुझे पैसा कब वापस करना है? मैं first week को किसी borrow करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है. Exchange rates keep on fluctuating. International market is highly volatile. What I do? I enter into a forward. Forward means what? Future contract. On 1st May itself, मैं बैंक के साथ एक करार करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि भाई मैं आपसे 1st अगस्त को $10,000 बाय करूंगा, क्या रेट से? 70 रुपीस. क्या रेट से? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस क्या है? To remove the risk, to remove the uncertainty. एक बार ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप मुझे पता है आज से 3 महीने के बाद 1st अगस्त को बैंक में इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितना डॉलर देगा? $10,000. हमें बैंक को कितना देगा? 7 रुपीस की कम से 7 लाख रुपीस देगा. मैंने बोला तो फिर कितना पैसा मिला? 7 लाख. जब मैं रीपे करूंगा तो मेरे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. मार्केट में रेट कुछ भी लेने दो, 70 का लेने दो, 68 लेने दो, मुझे इतना पक्का पता है कि क्या रेट से पेमेंट करेगा? 70. I have eliminated the risk. I have removed the uncertainty regarding the transaction. अब ये पक्का हो गया, मैंने जो पैसा दिया था 70 रुपीस की, सब 7 लाख रुपए मिला, मैं वापस को तो कितना वापस करूंगा? This is called as mitigation of loss or minimization of the loss by trying to enter into a forward contract. तो दूसरा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. Any contract where I agree to buy or something at a predetermined price at a future date is called as a forward contract. So I agreed to buy $10,000 from Sudhanshu after 90 days at rupees 67. ये क्या हो गया? Forward contract हो गया. I agreed to sell $25,000 to Abhinav after 130 days at rupees 72.5. ये भी क्या हो गया? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप technically anything, now ऊपर क्या है? Foreign currency and $20 dollars. It can be anything. It can be anything. Okay, like I am a farmer. I got some crops in my farm. It's the rainy season now. I know whether the crop will be ready by the next 3 months, by the end of October. So I can enter into a contract to sell this now. Today in the month of June, I will enter into a contract to sell something that is not yet grown in my farms. Someone at a predetermined price. That will be also called as a
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी फ्यूचर डेट पे कुछ सेल करने के लिए आज ही एग्रीमेंट करते हैं और प्राइस भी प्री डिटरमाइंड होता है। उस दिन का प्राइस क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। We simply enter into a transaction today to buy or sell something in the future, and the price is decided today itself with respect of what is the market price on that future day. My example, first May I borrowed the foreign currency, I borrowed $10,000, and on the same day I entered into a transaction to buy $10,000 after 3 months because I know very well 3 महीने बाद मुझे $10,000 लगेगा, मुझे वापस करना है पैसा। Is that clear? What is the forward exchange contract? The forward contract क्या होता है समझ में आया? अपने को ज्यादा relevant नहीं है honestly. Okay. Now there are two currencies I am going to talk about. One is the reporting currency and one is the foreign currency. Reporting currency and let us see what is the reporting currency and foreign currency. Yeah. There comes the concept of reporting currency and concept of foreign currency. Currency used in presenting the financial statements. The currency in which financial statements are reported, they are presented. अगर हमारे लैंग्वेज में जिस करेंसी में मेरा बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट दिखेगा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग करेंसी कहलाएगा। एंड एनी करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी बिकॉज़ है ये अपने इसके दाम में आएगा, नेवर नो। क्लियर है ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Something called as foreign operations. Foreign operations. What's a foreign operation? What's a foreign operation? Very simple words. Foreign transaction. हमारी लैंग्वेज में, बट एएस के लैंग्वेज में फॉरेन ऑपरेशन किसको कहा जाएगा? फॉरेन ऑपरेशन इज ए सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और branch of a reporting enterprises, the activities of which are based or conducted in a country other than country of. So State Bank of India has got a bank somewhere in Qatar. They have got a branch somewhere in Qatar. They have got a branch somewhere in, let us say, US. State Bank of India prepares their financial statements in India. They are prepared in the reporting currency, that is Indian rupees. उनका एक ब्रांच या उनका एक सब्सिडियरी या उनका एक जॉइंट वेंचर या उन्हीं का कोई एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर अदर देन कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज लिखा उसे कहा जाएगा फॉरेन ऑपरेशंस। So any transactions in a country other than any transaction in a country other than country of country where the transactions are in reporting currency is called as a foreign operation. And such transactions can be done by the subsidiary, it can be done by the branch, it can be done by the joint ventures, or it can be done by the associates. Clear? ठीक है, थोड़ा सा थियरी है।
ये बेस है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट सम शुरू कर दूंगा तो भी समझ में आएगा, बट देन दैट इज नॉट द मोस्ट प्रॉपर और एप्रोप्रिएट वे टू टीच. ओके, start the sums today, so don't worry about that part. Last two concept में discuss करूंगा and then we'll have a small break of 5 to 10 minutes. All your doubts regarding the notes and all, I'll come back, just wait. Let us say there is a company called as XYZ Limited. Now XYZ Limited has its head office in Mumbai. They operate pan India. They have outlets all over India. And they also have outlets in China and Dubai. XYZ कंपनी का दो आउटलेट्स, एक चाइना में है और एक कहां पर है? जान तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं. All decisions of these outlets are taken by हेड ऑफिस, जो कि कहां पर है? इंडिया में. यस गाइस, XYZ कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में है. उनका मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशंस ऑल ओवर इंडिया है. दो ब्रांचेस उन लोग कहां पे ऑपरेट करते हैं? एक दुबई में और एक, अच्छा वहां पे भी जो ट्रांजैक्शंस होता है, वहां पर भी जो बिजनेस होता है, उसको लेके सभी डिसीजंस कहां पे लिए जाते हैं? हेड ऑफिस. ओके, मान लो वो इंडिया के बाहर वाले जो आउटलेट है उनका नाम है XYZ दुबई एंड XYZ चाइना. सर इन दोनों को कहा जाएगा, इन दोनों को कहा जाएगा इंटीग्रल. इंटीग्रल मतलब they are a part of the head office. They are completely dependent upon the head office. Majority of the decisions regarding the foreign outlets is taken in India itself. That is called as integral. इंटीग्रल मतलब वो इंडियन कंपनी का ही पार्ट है, पर इंडिया के बाहर ऑपरेट करता है, और उसको लेके सभी डिसीजंस इंडिया में ही लिए जा रहे हैं. प्लीज लास्ट 2 or 3 minutes. ऐसा बोलेगा तो बच्चा थोड़ा ध्यान देता है. लास्ट 2 or 3 minutes, just wait. So imagine XYZ is an Indian company having head office in Mumbai, and they have one more branch. They have a branch outside India. Can you idea? Let's not discuss where is the branch, but that branch is completely independent. हेड ऑफिस ने इंडिया से सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड किया, पैसा लगाया उसको. वो ब्रांच ऑटोनोमस है. वो ब्रांच अपने डिसीजन इंडिया के बाद खुद लेता है. वो इंडियन हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट. दैट इज कॉल्ड एज नॉन
इंटीग्रल से क्या कहा जाएगा? इंटीग्रल मीन्स operating outside India but part of the main organization and majority of the decisions are being taken in India itself. Non-integral Indian company owns that foreign branch or foreign joint venture, but Indian company का Indian board of directors का वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, है तो एकदम मिनिमल है, मिनिमल। अभी तो ध्यान दो, इंटरफेरेंस तो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Clear? Integral, non-integral, clear? I don't want to go into the legal definition, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं रीड करेगा इंग्लिश में, तुम लोग हाँ करेगा, बात खत्म हो जाएगा। That doesn't make any sense. Learn and remember the things with the examples. That's it. That's the best way to learn. अपन ने 3 days देखा है ना, अमेरिकन एक्सपीरियंस एवरीथिंग विद एग्जांपल्स, डेमो देता है हर चीज का। अपन भी एग्जांपल के साथ ही सीखना है सर। ओके, एनी क्वेरीज के लिए? We'll have a break of 10 minutes. If everything will be decided by you, then what is the purpose of me be there in the class? It's 9:52 right now. We'll be back by 10:05. You've got 13 minutes. Your time starts now. The thing I want to discuss is transaction date, rate and closing rate and average rate. 3 rates हैं. These are the most important rates for us. First is the transaction date rate. So imagine I'm buying a new machinery using some foreign currency on 1st of Jan. First Jan 2022, I purchased a machinery of $1 lakh, and I paid this money after 4 months or after 5 months on 1st May 2022. I paid $1 lakh. The date when the transaction is entered is 1st Jan. The date when the transaction is entered is 1st Jan. First Jan 2022. I purchased a machinery for $1 lakh. ठीक है, ठीक है ना? मशीनरी है वो, क्या है? मशीनरी। चलो, let us say, yes, let us say when I bought this machinery, the exchange rate is, let us say, ₹60. Machinery is an asset. Asset buy किया, debit what comes in, credit what goes out. Basic rule of accounts. Machinery account will be debited. So let us say I'm buying the machinery from
XYZ International Limited. Narration: Dean machinery worth $1 lakh purchased. जब मैं इस ट्रांजैक्शन को इंडिया में रिकॉर्ड करेगा, when I record this transaction in India, my question is, can I record it in dollars? I need to convert those dollars into. सर जिस दिन मैंने बाय किया उस दिन का रेट क्या था? The day I purchased this, उस दिन का रेट क्या था? 60 रुपीज. तो यहाँ पे बच्चा लोग मेरा एंट्री क्या रेट से होना चाहिए? 60 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय $1 lakh. That comes to 60 lakhs. So machinery account debit 60 lakh rupees to supplier और creditor जिसको मुझे पैसा देना है, XYZ International, 60 lakhs rupees, right? Okay. Narration: bill machinery worth $1 lakh purchased at the rate of ₹60. ये मेरा कन्वर्जन रेट है, कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी इनटू. सर जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हो ना सर, उस दिन का जो रेट होता है उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन डे रेट. अच्छा, I paid this money somewhere on 1st May. और सर 1st May के पहले मेरा ईयर एंड होता है. ईयर एंड कब होगा सर? 31st March 2022. As on 31st March 2022, XYZ Limited को हमें कितना पेमेंट करना है? 60 lakh rupees. That is $1 lakh for the machinery purchase. अच्छा, is it your long-term liability or current liability? लायबिलिटी है, लायबिलिटी है पक्का. हमने एक मशीन बाय किया $1 lakh का. हमने एक मशीन बाय किया $1 lakh का, और जिससे हमने बाय किया उसको हमें पेमेंट कब करना है? 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, 1st May को. एनी अमाउंट दैट इज पेएबल इन लेस देन 12 months is current liability. Is a अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहेगा बस? Current liabilities as on 31st March. Year end is called as the closing day. Why closing day? Because that is the day when my books of accounts are closed for that particular year. So year end मेरा 31st March 2022 है. सर वो मेरा क्लोजिंग डे है. उस दिन का जो रेट होगा ना, उसे कहा जाएगा क्लोजिंग रेट. उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, मान लो क्लोजिंग रेट इज 62 रुपीज. $1 कितना है एज ऑन द क्लोजिंग डेट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहता है? यस 11 कहता है जब आपने बोरो किया था, जब आपने एसेट खरीदा था, जब आपने मशीन बाय किया, तो आपको कितना बचा देने का था? सर $1 lakh. क्या रेट से देने का था? 60 रुपीज के हिसाब से. ट्रांजैक्शन रेट, the rate when the rate at which, sorry, the rate on the day when the transaction is entered is called as the transaction rate. So when I purchase the machinery on 1st Jan,
I am supposed to pay 60 lakh rupees, $1 lakh at rupees 60, right? 31 मार्च को बैलेंस शीट में जब मैं करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा कि मुझे $1 लाख किसको देना है, XYZ लिमिटेड को मुझे $1 लाख देना है, तब मैं बोलूंगा अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मार्केट रेट 62, ₹2 रेट बढ़ गया कम हो गया, ₹2 ज्यादा देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा तो फायदा है क्या नुकसान है? AS11 कहता है कि भाई आपको इस तरीके के करंट पेएबल्स या रिसीवेबल्स को क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना पड़ेगा. यू नीड टू वैल्यू द अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल इन द शॉर्ट टर्म, दैट इज विदिन 12 मंथ्स एट दिस क्लोजिंग रेट. सर इसका क्लोजिंग रेट से वैल्यूएशन करेंगे तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? $1 lakh मल्टीप्लाइड बाय 62. हाउ मच आई हैव टू पे देन? बच्चा लोग जब मैंने बाय किया तब मुझे कितना पे करने का था एंट्री के हिसाब से? एज पर द जर्नल एंट्री आई हैड टू पे. सर एज पर द जर्नल एंट्री, as per the journal entry I had to pay how much? 60 lakh rupees. To whom? To XYZ International. But as on 31st of March मुझे पेमेंट कितना करना है सर? पेमेंट किया नहीं मैंने, वैल्यूएशन किया, उस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे पेमेंट कितना करना है? तो 60 लाख का लायबिलिटी था जब मशीन लिया था, 31 मार्च को कितना हो गया? 2 लाख बढ़ गया. तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो फायदा है क्या नुकसान है? नुकसान है, उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, 2 लाख का नुकसान हो गया. AS11 क्या कहते हैं? 2 लाख को रिपोर्ट करो, शो इट एज ए लॉस. तो लॉस क्या होता है P&L अकाउंट में? डेबिट होता है क्रेडिट होता है? लॉस P&L अकाउंट में डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है, पक्का डेबिट होता है, डेबिट ही होता है ना भाई. बेसिक एंट्री क्या होगा सुनो ना, एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. कितने का लॉस? 2. This loss has been incurred because of revaluation of amount payable to which party? XYZ International. So to XYZ International Limited account, वहां पर भी 2 लाख रुपए है. So profit and loss account debit to XYZ Limited account credit. This will be the entry for closing date. ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है किसी को? जब बाय किया एसेट अकाउंट डेबिट किया टू पार्टी अकाउंट, जब रिवैल्यूएशन किया तो ज्यादा पे करना पड़ा, नुकसान हुआ. तो नुकसान है तो P&L अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टी अकाउंट क्रेडिट करेंगे. तो P&L टू XYZ इंटरनेशनल लिमिटेड. तो फायदा होगा तो उल्टा एंट्री आएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट, पार्टी अकाउंट डेबिट. आउट. ये डाउट सर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ, फर्स्ट जैन को ट्रांजैक्शन हुआ, ईयर एंड आ गया 31 मार्च, और उसके बाद 1 मई को पेमेंट हो रहा है. और ट्रांजैक्शन एक दिन पे हुआ, उसका सेटलमेंट किसी और दिन पे हुआ, और बीच में 31 मार्च आ गया. तो 31 मार्च को हमने कहा क्लोजिंग डेट. ये डाउट कि सर अगर दोनों ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पहले होते तो क्या होता? ये डाउट है. So we borrowed, let us say on 1st Jan, and let us say we made the payment on 31st of Jan. तो क्या होगा? मशीन कब लिया? 1st Jan. पेमेंट कब किया?
वहां पे क्लोजिंग डेट आएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, वहां पे क्लोजिंग डेट का जरूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट जैन ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट कब हुआ, 31 जैन सेटलमेंट डेट, वहां पे क्लोजिंग डेट का जरूरत ही नहीं है, उसके बीच में 31 में आ ही नहीं रहा है ना, देयर इज नो क्लोजिंग डेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा वहां पे एंट्री क्या होगा मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो इसका आगे थोड़ा बात करते हैं। अब फर्स्ट में को मान लो पेमेंट कर दिया, फर्स्ट में को मैंने पेमेंट कर दिया, फर्स्ट में का रेट है 61 रुपीज। होल्ड ऑन, last transaction now. Let us say this transaction is now closed on. मान लो इस ट्रांजैक्शन को हमने क्लोज किया फर्स्ट मई को, फर्स्ट मई को हमने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट करना है बच्चा लोग, $1 lakh paid on 1st May at rupees 61। क्या रेट से पेमेंट किया, पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री आएगा, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, XYZ इंटरनेशनल लिमिटेड इज द रिसीवर, ये डेबिट होगा, ये आपका डेबिट होगा। सर $1 लाख क्या रेट से पेमेंट करोगे, 61 रुपीज, 61 लाख का पेमेंट होगा। टू बैंक, पेमेंट बैंक से रहेगा, कैश में तो नहीं करेंगे। अगेन $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 61 रुपीज, तो 61 लाख का पेमेंट हो गया। ठीक है, कुछ डाउट है, तो पहले बाय किया मशीन, एंट्री वॉज मशीनरी टू, एंट्री वॉज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, इन मशीनरी परचेज वर्थ $1 lakh एट रुपीज सो एंड सो। फिर हमने ईयर एंड में वैल्यूएशन किया, हमने कहा जब बाय किया तब क्या रेट था 60, अब क्या रेट हो गया 31 मार्च को 62, ₹2 क्या होगा रेट, ₹2 रेट बढ़ गया तो उतना ज्यादा देना पड़ेगा, तो हमने कहा नुकसान है, नुकसान है तो हमने P&L अकाउंट डेबिट किया, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तीसरा एंट्री हमने फर्स्ट डे को पेमेंट किया, पार्टी इज द रिसीवर, तो XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा गया। डाउट है कुछ, अब फर्स्ट में को क्या सोचने का, फर्स्ट में को आपका अप्रोच क्या होगा, आप बोलोगे फर्स्ट में को कि 31 मार्च को हमने जब इसका वैल्यूएशन किया था तो पेमेंट क्या रेट से करना था 62, ध्यान तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन 31 मई को, 31 मई अपना फर्स्ट मई को मैं क्या बोलेगा कि 31 मार्च को जब हमने वैल्यूएशन किया था तब हमें हमारा रेट क्या था 62, क्या रेट था, हमने पेमेंट क्या रेट से किया, हमने पेमेंट क्या रेट से किया, ₹1 ज्यादा दिया कम दिया, फायदा है क्या नुकसान है, फायदा है तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा कुछ यूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड XYZ अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो 1 लाख,
1 लाख डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज। मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि सर अभी कोई ऐसा कोई है कि जो सोच रहा है कि सर जब बाय किया तब 60 में बाय किया था, पेमेंट किया 61 में, 1 रुपया का नुकसान हुआ। जब बाय किया तब क्या रेट से बाय किया? अब जब पेमेंट कर रहे बाय किया 1 मार्च को, तब क्या रेट था? 60 रुपीज। अब जब पैसा था तब क्या रेट है? 61। 1 रुपया ज्यादा दिया, सर नुकसान हुआ, आप तो फायदा दिखा रहे हो। ऐसा कोई सोच रहा है? ऐसा सोच रहा है? सोच रहे हो? सोच रहा है, मुझे पता है। बीच में है ना, बीच में क्लोजिंग डेट आ गया था। बीच में क्या आ गया था? क्लोजिंग डेट आने की वजह से आपने बाय किया 1 मार्च को, दैट वाज द ट्रांजैक्शन डेट। उसके बाद क्लोजिंग डेट आ गया, तो हमने वैल्यूएशन किया बेटा, क्या डेट से किया? क्लोजिंग डेट अगर आ जाता है ना, तो आपको ट्रांजैक्शन डेट देखने का जरूरत ही नहीं पेमेंट के टाइम पे। इसको देखने का, क्लोजिंग डेट का रेट देखने का। मैं बोलेगा क्लोजिंग डेट पे रेट क्या था, हमने वैल्यूएशन क्या रेट से किया था? 62 रुपीज। हमारे हिसाब से 31 मार्च को बैलेंस शीट में हमें 1 लाख डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 62, हमें 62 लाख रुपीज देना था। किसको? XYZ इंटरनेशनल लिमिटेड को। और जब हमने 1 मई को उसको पेमेंट किया, क्या रेट से किया? 61 से पेमेंट किया, तो देना था 62 लाख एज ऑन 31 मार्च के हिसाब से वैल्यूएशन। पेमेंट किया 61 लाख, 1 लाख रुपया कम दिया, ज्यादा दिया? डाउट है? एनी क्वेश्चंस? फुल प्लेस सम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तीन ही चीज ध्यान रखने का। ट्रांजैक्शन डेट, द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, क्लोजिंग डेट बीच में आ गया, लास्ट में पेमेंट या रिसिप्ट वाला डेट। अभी ये बाय वाला केस है तो ये पेमेंट वाला डेट है, सेटलमेंट डेट बोलेगा मिस्टर। क्लियर है? ओवरडोज हो रहा है क्या? ओवरडोज हो रहा है क्या? नहीं, पक्का? ब्रेक दिया था इतना बड़ा, क्या ओवरडोज हो रहा है? क्लियर है सब? कुछ लिखना है इसमें से किसी को? Anyone wants to write anything here? No compulsion from my side. किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो। क्लियर करूं? नहीं लिखना है पक्का? क्लियर कर दूं? एक कोई लिखने वाला कोई नहीं है ना? अब आपके वाले केस में आ जाते हैं। if there is no closing date in between, सेम एग्जांपल। चलो फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा नहीं दिख रहा तो बोलना मुझे। I don't use such a big font size honestly. First Jan 2022, we purchased a machinery at rupees, same example, 1 लाख का मशीन बाय किया, रेट क्या था अपना? 60 रुपीज। टेल मी द जर्नल एंट्री। बच्चे लोग टेल मी द जर्नल एंट्री। सर एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, इससे बाय किया मशीन XYZ लिमिटेड से, टू XYZ लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, इट विल बी 1 लाख डॉलर्स multiplied by 60 rupees. Those who are not interested, they can leave the class. It won't impact your internal marks. लिख के देता मैं बॉन्ड पेपर पे। पढ़ना है तो बैठो, नहीं तो टाइम पास करने के लिए बैठो मत। जिस दिन मेरे को नहीं पढ़ाने का, मैं ओपनली बोल देगा मेरे को नहीं पढ़ाने का मूड नहीं है, नहीं पढ़ा रहा। आई एम एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विथ माय प्रोफेशन, लेट मी वेरी क्लियर। नहीं पढ़ना, यू कैन मूव आउट। कोई कंपल्सन नहीं है बैठने का लेक्चर।
And trust me, it won't impact your external or internal marks. Not at all. चलो याद है, टेंशन मत लो. क्या what's your name? Tanish. Tanish, we purchase a machinery on 1st Jan. Please. Last 10 minutes भी 15 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैं. Sir, machinery to XYZ Limited 60 lakhs. अरे भाई और बहनों, एडिशन 3 मशीनरी. अरे क्या लिखता है? 3 मशीनरी परचेस फॉर $1 lakh at the rate of rupees. ओके, ठीक है. अच्छा सर, इसका पेमेंट इमीडिएटली हो गया 31 जैन. 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे. 31 जैन पेमेंट हो रहा है. 31 जैन पेमेंट हो रहा है. पेड $1 lakh at the rate of rupees 60.5. पेमेंट हो गया. पेमेंट कर दो सर. डेबिट द रिसीवर. हु इज द रिसीवर? XYZ लिमिटेड इज द रिसीवर. कितना पेमेंट किया सर? $1 lakh multiplied by 60.5. that comes to 60,50,000 to bank. $60,50,000 addition in $1 lakh paid at the rate of rupees 60.50. Clear? Any questions? सर जब बाय किया तब क्या रेट था? पेमेंट के तब क्या रेट है? 50 पैसा ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है? ज्यादा दे रहा है तो फायदा है क्या नुकसान है? नुकसान है तो P&L अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था? पेमेंट कब किया? 31 जैन. तो लॉस भी कब बुक करेंगे? 31 जैन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2. मल्टी का नाम क्या है? $1 lakh. जिनको ऐसा समझ में आता है $1 lakh पे 50 पैसा ज्यादा पे किया, वो डिफरेंस 50,000 का लॉस. एडिशन क्या आएगा इसका? 3 लॉस ड्यू टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिकॉर्डेड या एंटर्ड. एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे तुम्हारा क्लोजिंग डेट का कुछ काम ही नहीं है. क्लियर है? ऑल ऑफ यू? एनी क्वेरीज? क्लियर? एकदम बेसिक. no compulsion to write anything in my lecture. You guys open up 20 here. तो यहाँ पे बोलते तो मेरा लेक्चर में इसका डिफरेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है. For me it's like a short video 50 minutes. तुम देख लो बेटा. पहले बोला है कि और लेक्चर ये everything clear? अब तक जो डिस्कस किया सब समझ में आ रहा है सबको? Any questions, any queries? My language is okay. तो ऐसा बोलता है क्या बोलता है समझ में नहीं आता. ऐसा भी है कोई? ऐसे बोलो अभी. जो है अभी बोलने का नहीं समझ में आएगा, वंस मोर बोलने का. क्या बोलने का? ओके, क्लियर? Can we stop here?